Hello everyone. Have you ever imagined talking to animals? What if your pet could tell you exactly what it was thinking? And what if a doctor became famous all over the world because he could understand the language of animals? Sounds impossible, right? Well, today's story is about a very special doctor, Dr. Dolittle. Let's begin. Dr. John Dolittle was a famous doctor who treated people. One day, a man called the cat's foot man came to visit him because he had a stomach ache. While talking the doctor, he said, "Why don't you become an animal doctor? You understand animals much better than other people." Dr. Dolittle's pet parrot, Polynesia, was listening carefully. As soon as the man left, Polynesia said, "That is a wonderful idea. You should become an animal doctor." The doctor was surprised. Then Polynesia revealed an amazing secret. She said, "Animals have their own language." Dr. Dolittle could hardly believe it. Polynesia explained that animals and birds do not communicate only with sounds. They also use their eyes, ears, tails, wings, and body movements. The doctor became very excited. He quickly brought a notebook and started learning the language of birds and animals. Day after day, he practiced and learned more. Soon he understood what animals were trying to say. After some time, he stopped treating people and became an animal doctor. Now, something wonderful happened. Animals started visiting him from everywhere because they knew he could understand them. One day, a plough horse came to him. Other doctors had been giving the horse medicines, but nothing worked. Dr. Dolittle spoke to the horse and discovered the real problem. The horse was not sick at all. It simply needed spectacles. So, Dr. Dolittle made a pair of green glasses for the horse. The horse was happy again. News spread everywhere. More and more animals came to see him. Dogs, cats, cows, sheep, birds, mice, bats, and many others visited his house. Soon there were so many animals that the doctor had to make separate rooms for different animals. His house became like a hospital for animals. Migratory birds carried stories about him to distant countries. Very soon, Dr. Dolittle became famous all over the world. People admired him and animals loved him. Most importantly, he was happy because he was doing what he truly loved. So, what do we learn from the story? We learn that animals also have feelings. They communicate in their own ways. If we observe them carefully and treat them with kindness, we can understand them better. Dr. Dolittle's success came from love, patience, and understanding. And that is the greatest lesson of this chapter. Thank you for listening. Okay, now come to Hindi.
नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जानवर हमसे बात कर पाते तो क्या होता? तो मैं अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इस कहानी में ये होता है कि एक दिन कैट्स फूडमैन नाम का एक व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत लेकर उनके पास आया, डॉक्टर डोलिटल के पास। बातों बातों में उसने कहा, डॉक्टर साहब, आप जानवरों को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आपको इंसानों के बजाय जानवरों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। डॉक्टर की पालतू तोता पॉलिनेशिया यह सब सुन रही थी। उस व्यक्ति के जाने के बाद पॉलिनेशिया बोली, वह बिल्कुल सही कर रहा था, आपको जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर हैरान रह गए। तब पॉलिनेशिया ने उन्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा, जानवरों और पक्षियों की अपनी भाषा होती है। डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। पॉलिनेशिया ने समझाया कि जानवर केवल आवाज़ों से ही नहीं, बल्कि अपनी आँखों, कानों, पूंछ, पंखों और शरीर के हाव भाव से भी बातें करते हैं। यह जानवर डॉक्टर बहुत उत्साहित हो गए। यह सुनकर डॉक्टर उसको बहुत अच्छा लगा। वे तुरंत एक कॉपी और पेंसिल लेकर आए और जानवरों की भाषा सीखने लगे। दिन प्रतिदिन वे नई नई बातें सीखते गए। धीरे धीरे वे जानवरों की भाषा समझने लगे। अब उन्होंने इंसानों का इलाज छोड़ दिया और जानवरों का डॉक्टर बन गए। इसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। दूर दूर से जानवर उनके पास आने लगे। एक दिन एक घोड़ा उनके पास आया। दूसरे डॉक्टर उसे दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर डोलिटल ने घोड़े से बात की और उसकी असली समस्या जान ली। घोड़ा बीमार नहीं था, उसे केवल चश्मे की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने उसके लिए हरे रंग का चश्मा बनवाया। घोड़ा फिर से हंसी खुशी काम करने लगा। यह खबर चारों ओर फैल गई। अब कुत्ते, बिल्लियाँ, गायें, भेड़ें, पक्षी, चूहे और कई दूसरे जानवर उनके पास आने लगे। उनका घर जानवरों से भर गया। इतने जानवर आने लगे कि डॉक्टर को अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग दरवाज़ा बनवाना पड़ा। प्रवासी पक्षी भी उनकी प्रसिद्धि दूर देशों तक ले गए। कुछ ही समय में डॉक्टर डोलिटल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। जानवर उनसे प्यार करते थे और लोग उनका सम्मान करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपने काम से बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हर जीव की अपनी भाषा और अपनी भावनाएं होती है। क्या प्रेम और समझदारी हमें जीवन में सफल बनाती है? यही इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।